इलोन मस्क जो इस प्लेनेट के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, इनको एक हैकर ग्रुप एनोनिमस से धमकी मिल रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई छोटा मोटा हैकर ग्रुप है तो आप गलत हैं। एनोनिमस इस दुनिया की सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज हैकिंग ग्रुप है जो अलग अलग देशों के गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज और अमीर लोगों को टारगेट करती है। इनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कुछ पता नहीं इनके बारे में। 2-3 दिन पहले एनोनिमस हैकर ग्रुप ने एक वीडियो जारी करते हुए इलॉन मस्क को धमकाया। एनोनिमस ग्रुप के अनुसार इलॉन मस्क ने अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए क्रिप्टो करेंसी में अपने ट्वीट्स के जरिए काफी मैनिपुलेशन यानी कि फेरबदल किया है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले लाखों आम लोगों को भारी नुकसान हुआ और इसी कारण से लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। वीडियो में आगे एनोनिमस ग्रुप कहता है कि इलॉन मस्क के ट्विटर कमेंट्स को पढ़ने से ये पता चलता है कि कैसे अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ट्विटर का गलत इस्तेमाल करते हुए इलॉन मस्क ने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया और उनके खून पसीने की कमाई से अपना जेब भर ली। वीडियो में आगे एनोनिमस ग्रुप कहता है कि इलॉन मस्क एक सेल्फिश और घमंडी अरबपति है जिसको सिर्फ अपना फायदा दिखता है और अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ये इंसान लाखों लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। वैसे पिछले कुछ दिनों में इलॉन मस्क ने अपने ट्वीट्स के जरिए क्रिप्टो करेंसी में काफी मैनिपुलेशन किया है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले लाखों आम लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। इलोन मस्क का हर ट्वीट उनके पर्सनल बेनिफिट और उनके कंपनी के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आपको क्या लगता है, इलोन मस्क जो इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, उन पे एनोनिमस ग्रुप की इस धमकी का कोई असर होगा? और इलोन मस्क ने क्रिप्टो करेंसी के साथ जो मैनिपुलेशन किया, क्या वो सही था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अमेजिंग फैक्ट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं जिसमें एनोनिमस ग्रुप ने इलॉन मस्क को धमकी दिया है। Greetings, citizens of the world. This is a message from Anonymous, for Elon Musk. For the past several years you have enjoyed one of the most favorable reputations of anyone in the billionaire class, because you have tapped into the desire that many of us have to live in a world with electric cars and space exploration, but recently your carefully created public image is being exposed, and people are beginning to see you as nothing more than another narcissistic rich dude who is desperate for attention. It appears that your quest to save the world is more rooted in a superiority and savior complex than it is in actual concern for humanity. This has been obvious to your employees for a long time, who have faced intolerable conditions under your command for years. It is also obvious to the young children working in your overseas lithium mines, which are destroying the local environment as well. You have been open about your willingness to stage coups in order to install dictators in places where your toxic products are being mined. You have even prematurely crowned yourself Emperor of Mars, a place where you will be sending people to die. Your fanboys overlook these issues because they are focused on the potential good that your projects can bring to the world, but you are not the only show in town, and your competition is growing more intense with each passing day. There are plenty of other companies working on space exploration and electric vehicles. You are just the only CEO who has gained a cult following through shitposting and trolling the world on social media. In fact, many people are now learning that the vast majority of Tesla's income doesn't actually come from selling cars, it comes from government subsidies, selling carbon tax credits for your innovation with clean energy. This technically isn't your innovation though, because you aren't actually the founder of Tesla, you simply purchased the company from two people much more intelligent than you are, Martin Eberhard and Mark Tarpenning. Tesla has also made more money holding Bitcoin for a few months than they did in years of selling cars. It is also more than likely that this Bitcoin was purchased with money from these government subsidies. It is now widely believed that you have been forced to denounce your company's involvement with Bitcoin in order to keep that green government money flowing into Tesla's coffers. The energy use argument about proof-of-work mining is a very nuanced conversation that requires a fairly complex understanding of how power grids work, and how excess energy is wasted by power companies, and sought out by crypto miners. This is a conversation that you have been having for over a year and were intimately aware of, but as soon as your main source of income was threatened you pretended to be clueless in an attempt to play both sides of the fence. Then, your move to create a Bitcoin miner council was rightly seen as an attempt to centralize the industry and take it under your control. Reading from the comments on your Twitter posts,
It seems that the games you have played with the crypto markets have destroyed lives. Millions of retail investors were really counting on their crypto gains to improve their lives. This is something that you will never understand because you were born into the stolen wealth of a South African apartheid emerald mine and have no clue what struggle is like for most of the working people in the world. Of course, they took the risk upon themselves when they invested, and everyone knows to be prepared for volatility in crypto, but your tweets this week show a clear disregard for the average working person. As hard-working people have their dreams liquidated over your public temper tantrums, you continue to mock them with memes from one of your million-dollar mansions. You may think you are the smartest person in the room, but now you have met your match. We are anonymous. We are Legion. Expect us.